Hello, people. Welcome to another session on mock interview series for BARC and NPCIL. And today we have Ankur Bansal sir with us in the panel and Sumit Panchal. तो सुमित पंचाल Yes, कौन sir. सा इंटरव्यू की आप प्रिपेयर कर रहे हो अभी नेक्स्ट? So basically, I have interview schedule of BARC and NPCIL online. Okay. So I am currently preparing for BARC and NPCIL interview. Okay. So will you like to give us your small introduction? Yeah. So my name is Sumeet Pansal, and I have completed my graduation from LD College of Engineering in Chemical Engineering Department, and I have secured All India rank 355 in GATE 2025 Chemical, and currently I have selected for BARC and NPSL interview. Fine, wonderful. So how many subjects you have prepared for BARC? So I have prepared 5 subjects currently for BARC. What are those 5 subjects in preference order? Yeah. So first is HT, then mass transfer, then fluid mechanism. Then I have CRE and Thermodynamics. So heat is the strongest and thermo is the least preferred choice, Yeah. or equal. Not the least choice, but I am more confident in heat rather than thermo. So Okay, so just let's start with one simple question. yes. What is the difference between heat transfer and thermodynamics? The basic difference between heat transfer and thermodynamics is that in thermodynamics, we determine how much of heat for a particular substance we have to provide. But in heat transfer, we determine the rate of heat transfer. Okay. So in heat transfer, what is your most favorite topic or chapter? So, madam, in heat transfer, my most favorite subject is heat exchangers. Heat exchangers. Wonderful. So you have interviewed for NPCIL also, correct? Yes, sir. Okay. So do you have any idea about the nuclear reactors? Yes, I have some sort of idea like how they are generating. Let's stick to the BARC only इस interview में ना NPCL का फिर अलग से ले लेंगे एक बार. Okay, sir. Okay. Let's stick to the BARC only. Okay. So you said you have some idea. So Yeah. my question is, in case of nuclear reactors or any reactor in which exothermic reaction takes place, what are the cooling systems we can use or we use generally in commercial vehicles or industries? So, cooling system depend on the particular use of that equipment where it is using. Like in commercial vehicles, we use like air cooler of heat exchanger for cooling. But I get the point where you are talking about what process do they use in NPCL. So they use as a condenser while generating mechanical energy, converting heat energy to mechanical energy. Okay. So you said air coolers, correct? So can you tell me the difference between air coolers and air conditioners? Air cooler and air conditioner. The basic fundamental difference. So basically, air cooler is we particularly say air cooler when we are using air as a utility for reducing the temperature of process stream. But in air conditioner, we Yes. In air conditioner, we use when actually after compression, when its pressure is increased, and after that it get condensed.
So at that time we use air cooler. मैं समझा नहीं, क्या आप एक्सप्लेन करोगे थोड़ा एक बार फिर? So the कंप्रेशन एंड ऑल basic, क्या कह रहे हो आप? मैं समझ नहीं पाया. सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा था, एयर कंडीशनर और एयर कूलर? Yeah, what is the fundamental difference in working of air cooler and air conditioner? सर जस्ट a minute. So basically, air conditioner is a combination of equipments where where we are reducing the temperature, like chilling the atmosphere, like. Okay, and air cooler? Air cooler. Okay, just leave it. Tell me the working principle for both. मतलब, if you have any idea. Sir, I have idea regarding the air cooler. So what is the working Like, principle of air cooler? so we use air as a utility for cooling of the process stream. Air is also used in air conditioners. That's why both are air cooler and air conditioners. Have you prepared about cooling towers? Yes. What is the working principle of cooling towers? So the working principle of cooling tower is based on the evaporating cooling. Same is for air cooler. Okay. And Actually, for air conditioner, it is refrigeration cycle. Yes. Chalo. Sir. Yes. हाँ, तो सुमित तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस पे हीट था? Yes, sir. एंड सेकंड पे? सेकंड पे मास. और थर्ड पे? FM. ठीक है, तो हीट ट्रांसफर से शुरू करते हैं. ठीक है, आप मुझे कन्वेक्शन और कंडक्शन में डिफरेंस बता दो. So basically, conduction means transfer of heat by a molecular while with the process of oscillation without leaving it. दोबारा बोल दो यार, क्या बोल रहे हो? हाँ. So basically, सोच के बता दो. So in conduction, the molecule transfer heat from one side to another without leaving its mean position while oscillating. And in convection, molecules movement takes place while transferring heat. अच्छा, ठीक है. assumptions of Fourier's law बता दो. So assumption of Fourier's law is first of all is a steady state. Then first assumption is steady state. Then steady state थोड़ा ढंग से बताओ ना. First of all, steady state. Proper. So heat okay. transfer takes place at the steady state, which means there is no changes with respect to time. The temperature at all the location, at all the points with respect to time remain the same. The time derivative should be 0. ढंग से बताओ ना, मतलब इंटरव्यू के अंदर हो आप. I see. So the heat transfer takes place in steady state process. So quantity with respect to time is constant. And heat basically transferring of heat. टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना. Yes. टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है ना del T by del Z. तो स्टडी स्टेट में del T by del T 0 हो जाएगा ना. हीट का थोड़ी ना तुम ग्रेडियंट लोगे बुद्धू. So and the second is all the properties with respect to body is constant in all the direction.
all like the thermal property with respect to body is constant in all the direction. ये क्या हुआ? like thermal conductivity is constant in x, y, and z direction. तो इसे क्या बोलेंगे? Uh, isotropic condition. Thermal conductivity must be isotropic in nature, Yes. which means the thermal conductivity remains the same in all the directions. Yes, sir. Take it. Next. So heat transfer is taking place in one direction only. Or in other words, the heat transfer taking place in other directions are so small that it can be neglected. Yes, sir. And in a complex geometry, if heat transfer took place in all the three directions, then we have to use the gradient. और बताओ. 4 years law की assumption पूछ रहा हूं मैं. हीट ट्रांसफर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है. नर्वस मत हो, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस. जैसे तुम पहले कॉन्फिडेंट थे वैसे कॉन्फिडेंट रहो. बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम्हें आता है. हैव बिलीव, तुम बोल पाओगे. बोलो, रिलैक्स हो जाओ, पानी पी लो. ठीक है, तुम नर्वस हो गए, तुम्हारे फेस पे दिख रहा है नर्वसनेस. स्टार्टिंग के क्वेश्चन से थोड़ा नर्वस हो गया. पानी है, पानी पी लो आराम से. 1 मिनट का वो ले लो. आंखें बंद करो. डीप टेक डीप ब्रेथ्स. अच्छा बताओ मुझे, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर द केस ऑफ हीट एक्सचेंजर, और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? So for calculating overall heat transfer coefficient for heat exchanger, it depends on 4 factors. First one is the basically heat transfer HTC of tube side. Then second is the heat transfer coefficient based on the heat transfer coefficient based on the flow of tube side fluid. Then heat transfer coefficient based on the flow of shell side fluid. Then based on the heat transfer coefficient due to the fouling fluid on the both sides, tube side and shell side. And heat conduction through shell side fluid, like between the shell side fluid and tube side fluid. Basically, conduction through tubes. So these all heat transfer coefficients are dependent. Like overall heat transfer coefficient depends on all these heat transfer coefficient. जब तुम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट लिखते हो तो जो तुमने बताया वैसे लिखते हैं या फिर उसे रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखते हैं? We write in the form of resistance. So you should say na, in order to calculate the overall heat transfer coefficient, we first determine the overall heat transfer resistance, where overall heat transfer resistance depends upon, अब तुम factors के नाम लोगे, the heat transfer resistance on the tube side, heat transfer resistance on the shell side, heat transfer resistance due to conduction, heat transfer resistance due to fouling factors. Ultimately वो जो equation है वो तो resistance की form में है ना, coefficient की form में तो नहीं है. Yes, sir. ठीक है. पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स में क्या डिफरेंस होते हैं, कौन सा बेटर है और क्यों? So the basic, or I can say the most important difference between parallel flow and counter flow heat exchangers are, like in counter flow, the temperature difference is uniform throughout the heat exchanger, throughout the length of heat exchanger. But in parallel flow, basically the temperature gradient decreases as we move on
towards the end of the heat exchanger. So this is the length of the exchanger. Move across the length of the exchanger. And the second one is the due to uneven temperature difference across the length of heat exchanger in parallel flow, there is a stress developed because of this. So thermal stress. Yes, thermal stress developed because of this, and it can impact the life of heat exchangers. So due to on the basis of these factors, we consider counterflow as a better choice. But जो सबसे important difference था वो तो तुमने बताया ही नहीं. Like the temperature difference is higher in the case of counterflow heat exchanger. हाँ, तो इसकी वजह से क्या होता है? So because of this, if we consider constant heat duty, then area of the parallel flow is higher than the area of the counterflow heat exchanger. हाँ, ये सबसे important difference है. Yes. Counterflow heat exchangers are compact for the same compact. heat duty in comparison to the parallel flow heat exchanger. You should start by this difference and then the other two difference जो तुमने बताया. ठीक है? ठीक है. Fins का heat transfer में क्या रोल है? Fins को यूज करने से क्या हमें बेनिफिट मिलता है? So the benefit we get by using fins are we basically increase the area of heat transfer. So since area is increased, we get better heat transfer. Hello. सुन रहा हूं मैं, बट थोड़ा दोबारा बोलो यार. मतलब फिन्स एग्जैक्टली क्या करती है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करने में हेल्प करती है. फिन्स आर यूज्ड एज द हीट ट्रांसफर एनहांसर्स. It enhance the area. करने के लिए वो एरिया बढ़ती है. मतलब एनहांस कैसे होता है? एरिया बढ़ाने से. हाँ, yes. तो एप्लीकेशन एरिया बढ़ाना नहीं है, एप्लीकेशन हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाना है. Yes, sir. हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाने के लिए फिन्स यूज करते हैं. और फिन्स यूज करने से बेनिफिट ये मिलता है कि फिन्स यूज करने से एरिया बढ़ जाता है. और उस एरिया को क्या बोलते हैं? उस एरिया को बोलते हैं एक्सटेंडेड एरिया. Extended area. Yes. ठीक है. इफेक्टिवनेस ऑफ फिन एंड एफिशिएंसी ऑफ फिन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? So just a minute. So effectiveness tells us that in how much heat transfer is increased with fins as compared to without the fins. And efficiency efficiency tells us that if the difference between how much heat transfer will increase if just a moment. So efficiency is the ratio of heat transfer with fins and heat transfer when the whole surface is as a uniform temperature, like source temperature. सरफेस टेम्परेचर. Surface temperature. तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज एक्चुअल हीट ट्रांसफर इन द केस ऑफ फिन टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर इन द केस ऑफ. ऐसे तो बोलेंगे ना, एक्चुअल बाय मैक्सिमम. ठीक है. एक सिलिंड्रिकल पाइप है. सिलिंड्रिकल पाइप इंसुलेटेड है. सिलिंड्रिकल पाइप के अंदर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हॉट फ्लूइड. एंड अब आपको ये निकालना है कि जो हॉट फ्लूइड है उसका सराउंडिंग से जो हीट ट्रांसफर हुआ है, हीट ट्रांसफर रेट आपको पता करनी है. कैसे पता करोगे? There is a cylindrical pipe. The cylindrical pipe is insulated with some material. Hot fluid is flowed inside, and that hot fluid is exchanging heat with the surrounding. How will you determine the rate of heat transfer? So we can determine rate of heat transfer by Fourier's law of heat transfer.
So in Fourier's law, rate is equal to minus Ka del t by del x. So here area is variable. So we will integrate like minus K. कहाँ जा रहे हो भाई? सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चन गेट में भी तो सोल्व किए होगे तुमने। So एक no sir, सिलेंडर है, I was इंसुलेशन है, अंदर हॉट फ्लूइड है, एक्सचेंज कर रहा है हीट विद द सराउंडिंग, कैसे निकालेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर? we have the formula to calculate rate of heat exchange, but बताओ I was फिर। expecting. So Q is equal to temperature difference by resistance, and resistance is equal to 1 by 2 pi KL multiplied by ln R2 by R1. और उसके बाद So it is for the when we have provided insulation, like in this case, we simply write Q is equal to HA delta T. टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 by 2 pi KL ln R2 by R1 प्लस आगे Plus 1 by HA. ये क्या है? Sir, just a moment. कितना होगा? We have just a simple cylindrical pipe and no insulation is there, na? So it will be Q is equal Insulation to is HA there. delta. Insulation is there. Okay. Cylindrical pipe is there. Insulation is there. The thickness of the cylindrical pipe is not mentioned. Just a cylindrical pipe is there with the insulation. Hot fluid is flowing inside, exchanging heat with the surrounding. I'm just asking a simple way to calculate the rate of heat transfer. So yeah, as I mentioned that Q is equal to del T by overall resistance. Overall resistance is resistance due to conduction and convection. So as you have mentioned, we have not we don't have a thickness of insulation. So we can Formula बताओ ना. Formula 1 by 2 pi KL ln R2 by R1 plus आगे बताओ. 1 by HA means heat transfer HA due. में A क्या है? What is A? A का value बताओ. H area is equal to 2 pi RL, and R will be the radius after covering the insulation. R is R1 or R2? R2. R2. Simple है यार, इसमें complex कर रखा है. No, actually, I was pinch point with respect to heat exchanger, na? So pinch point means when a particular fluid crosses the outlet temperature of another fluid. When a particular fluid crosses the outlet temperature of other fluid. Yes. So if I consider utility as a water, then and I am considering just assumption like we are reducing the temperature of process stream. This is a hot. So when the water basically across the length of heat exchanger, water will move and its temperature will increase as we move across the heat exchanger. So the point at which the temperature of water exceed the outlet temperature of hot fluid, at that point and at that temperature Zero becomes equal. Exceed equal. तो कर ही नहीं सकता. Equal. तुमने बोला ना exceed. Yeah, it can exceed in the case of a counter current. काउंटर करंट के केस में पिंच पॉइंट क्या होगा फिर? Sir, the definition is same like the point at which crosses the outlet temperature of fluid. नहीं, बट पिंच को तो क्रॉस नहीं किया जा सकता ना. पिंच पॉइंट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी क्रॉस्ड.
And you are saying that in the case of counter, it can be exceed. No. Pinch is a different thing, and cross temperature is a different thing. So pinch basically minimum temperature difference which is required for heat transfer to take place. Pinch point, तुम बता रहे हो, minimum temperature difference required for the heat transfer to take place. Pinch point. With respect to distillation, बताओ pinch point क्या होता है? So actually, I am not able to recall it. Minimum reflux ratio. So I should explain minimum reflux ratio. Minimum reflux ratio is a ratio of L by D at which basically minimum reflux ratio is a ratio. Sir, give me a minute. So minimum reflux ratio is a amount of minimum reflux we add into the distillation column such that the number of trays are infinite, and so basically from that we can do further calculation in distillation. What happens to 𝐂𝐴 at the case of minimum reflux? So in 𝐂𝐴 at minimum reflux, operating both operating line of stripping section and rectification section merge at a equilibrium line point, and that point is known as the pinch point, Sumeet. Okay, sir. Operating line, stripping line, feed line merges at the equilibrium line. When the operating line and the equilibrium point intersects, that point is known as the pinch point. Okay, can you go beyond equilibrium? Yes, no, you cannot go beyond equilibrium. Means you cannot go beyond pinch. Yes, sir. You cannot go beyond Okay. pinch. Yes, sir. In the case of heat exchanger, the pinch point will be the inlet temperature of hot fluid. In the case of heat exchanger, pinch point is that point at which the thermal equilibrium is attained. Yes, sir. When the thermal equilibrium is attained, if the length of the heat exchanger or the area of the heat exchanger is infinite, such that the hot fluid and cold fluid keep on exchanging heat till the infinite time, then the final temperatures that their outlet achieves is the pinch. Yes, sir. It is the maximum achievable temperature beyond Yes, which you cannot go. Yes, understood. That is pinch. Yes. So you cannot cross pinch in any case. Okay. So tell me the difference between absorption and adsorption. Adsorption is a mass transfer operation in which a particular material is adsorbed, like settle on the surface of a adsorbent. And in absorption, it is a unit operation in which both are unit operation. Yes, sir, but as far as definition is concerned, it's better to use now. So it is a unit operation in which solute from the gas phase is transferred to the liquid phase. So yeah. Solute from the gas is transferred to liquid.
ऑन द बेसिस कुछ ड्राइविंग फोर्स वगैरह कुछ तो बताओ। हाँ, on the basis of concentration difference driving force. ठीक है, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। So first one is a like normal absorption without any reaction involved, and second one, एडजॉर्प्शन के टाइप, एडजॉर्प्शन के टाइप। अच्छा, okay, absorption. So there are two types of absorption: chemical absorption and physical absorption. And So difference between them? In chemical absorption, there is a basically chemical absorption are very precise, like it absorb a particular solute, and physical absorption are not that much precise. It can absorb multiple compounds at a time. And physical absorption are reversible in nature, but chemical absorption are not reversible in nature. Adsorption is exothermic or endothermic? Like What about the change in entropy during the adsorption process? so, absorption is exothermic in nature, and change of energy is Energy positive. and entropy. Entropy. Change of entropy is positive, because since Positive. it is a yes. So since it is exothermic in nature and it releases heat, and entropy, increasing entropy depend on the heat, how much heat is released in the atmosphere. So, And what about delta H? During the adsorption process, delta H is negative or positive? Sumit, sir, delta H will also be positive. Positive. Yes. अभी तुम कह रहे हो exothermic process, अभी तुम कह रहे हो पॉजिटिव है। सुमित, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आपने बोला एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वहां पे एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। Yes, sir. कैसे? So, if like since it is a exothermic process, then it will release heat. So, if I talk about the surrounding will increase, like heat is exceeding from the absorbent surface. So, सराउंडिंग से मतलब ही नहीं है, बात एड्सॉर्प्शन प्रोसेस की हो रही है। मतलब इनिशियली मॉलिक्यूल्स बल्क में हैं, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट दे आर ऑन द सरफेस, दे रिलीज द हीट, एंड इफ यू गो बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी for reversible processes, ds is del q by t, or entropy is a thermodynamic property which increases when heat is added, decreases when heat is released, yes, sir. and remains constant if there is no heat transfer. Yes, sir. तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में जब वो एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज हो रहा है, मतलब रिजेक्ट हो रहा है, तो एंट्रोपी तो नेगेटिव होगा ना, एंट्रोपी चेंज। Yes, sir. If we talk
from the तो आप perspective, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो बिल्कुल सही दे रहे हो कि हाँ, हीट रिलीज हो रही है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा, बस इंक्रीज नहीं होगा। एंट्रोपी का मतलब क्या है? डिसऑर्डर। हाँ सर, अगर खुद सोचो, आप मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप हीट ऐड करोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो दे विल बिहेव, डिसऑर्डर विल इंक्रीज, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, दे विल एक्सपेंड मोर, तो एंट्रोपी विल राइज। On the other hand, if energy releases, heat releases, so it means they are cooling down, kinetic energy decreases, velocity decreases, so number of microstates decreases, so they will not expand, the free energy available will decrease, so entropy will decrease. yes sir, you are absolutely correct. But the I was looking at the perspective of surrounding, like in surrounding heat is Look at the सराउंडिंग की बात ही perspective of नहीं है सर, मैं absorption. प्रोसेस के लिए बोला है, तो एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? मॉलिक्यूल्स का हो रहा है ना। yes sir, absolutely sir, understood. Entropy will decrease from that. तो मेरा क्वेश्चन आप था कि adsorption is accompanied by the decrease in enthalpy and decrease in entropy. ये क्लियर हो गया तुम्हें? हाँ yes sir, डेल्टा एच भी डिक्रीज कर रहा है, डेल्टा एस भी डिक्रीज कर रहा है, yes sir. ठीक है। अब आ जाते हैं डेल्टा जी पर। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मुझे बताओ डेल्टा जी क्या होगा? So since it is a spontaneous process, while we are not giving any energy during the time of absorption. So during the time of absorption, the delta G is negative. Then only spontaneous reaction is taking place. So ओके, आगे अब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो डेल्टा जी को अगर नेगेटिव करना है तो मतलब so delta G will like from negative it will go towards zero. ओके, समझ गया। मैं पूछ रहा हूँ हाँ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसमें कि डेल्टा एच भी डिक्रीज कर रहा है, डेल्टा एस भी डिक्रीज कर रहा है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो कौन कितना डिक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है, कौन ग्रेटर है, कौन लेस है, वो पूछ रहा हूँ। sir, just a moment. So सर आपने अभी बोला था डेल्टा जी इज इक्वल टू कुछ समथिंग बोला था सर, वो आप वापिस से रिपीट कर डेल्टा सकते जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। समथिंग, थर्मो आपका 5th सब्जेक्ट है। सर के क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछना है मुझे। यस सर, श्योर। सर डेल्टा एस भी डिक्रीज कर रहा है एंड डेल्टा एच भी डिक्रीज कर रहा है। सो लाइक डेल्टा एस जैसे डिक्रीज कर रहा है तो वो ऑलरेडी नेगेटिव टर्म है। सो बेसिकली डेल जी इज डेल एच माइनस टी डी एस। सो जो टी डी एस टर्म है, क्योंकि सिंस डेल्टा एस डिक्रीज हो रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा।
एंड डेल्टा एच तो डिक्रीज हो ही रहा है, सो इसकी वजह से डेल्टा जी नेगेटिव टू 0 की तरफ मूव ऑन करेगा। डेल्टा एच और टी डेल्टा एस, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो माइनस टी डेल्टा एस वाली टर्म तो पॉजिटिव हो गई, हाँ और डेल्टा एच तो नेगेटिव है। तो अगर हाँ डेल्टा जी को नेगेटिव करना है तो डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा टी डेल्टा एस के कंपैरिजन में। हाँ, यस सर। Delta H has to be more negative in comparison to T delta S because T delta S is positive. And because the system will approach stability, so delta G जो है वो धीरे धीरे जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो जीरो की तरफ टेंड करने के लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस में क्या वेरिएशन आएगी? ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ पता है कब पढ़ा था हमने? बच्चे कब पढ़ते हैं इस चीज को? नहीं सर। ये बच्चे पढ़ते हैं 11th-12th में। ये देख रहे हो, ये एनसीईआरटी का एक वो है स्क्रीनशॉट। ये एनसीईआरटी है 12th क्लास की एनसीईआरटी, जहां पर हम एड्सॉर्प्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से लिखा हुआ है another important factor featuring adsorption is the heat of adsorption. यहाँ पे पूरा दे रखा है कि डेल्टा एच ऑफ द adsorption is always negative, delta S is negative, adsorption is thus accompanied by decrease in enthalpy as well as decrease in entropy. डेल्टा जी के बारे में बात कर रखी है, बता रखा है डेल्टा जी कैसे नेगेटिव होता है, और बता रखा है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है डेल्टा एच और कम नेगेटिव होता रहता है, और अल्टीमेटली डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है और डेल्टा टी जीरो हो जाता है, और इस तरह से इक्विलिब्रियम अचीव होता है। ये हम 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं बीटेक की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। बीटेक में जो थर्मो तो पढ़ा है, मैं तो 11th-12th की बात कर रहा हूँ। इट्स सो बेसिक्स। ठीक है अंकुश सर। अब मेरा एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, जो भी आप लोगों का डिस्कशन हुआ जी, यहाँ पर क्वेश्चन इज डेल्टा एच इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, और एक्चुअली डेल्टा जी इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई डेल्टा एच हैज टू बी नेगेटिव। मतलब एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होने की वजह से गिव्स एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा, या गिव्स एनर्जी चेंज नेगेटिव होने की वजह से एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आया है? क्योंकि एंट्रोपी तो नेगेटिव होना ही है इधर, एंट्रोपी चेंज उसे आप अगर हीट के टर्म्स में ना भी देखो तो आप फिजिकल सिग्निफिकेंस में भी समझ सकते हो कि गैस मॉलिक्यूल्स जब बल्क स्टेट में है तो वो रैंडम बिहेवियर शो करेंगे, और जब वो सरफेस के ऊपर आके एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो उस केस में वो एक ऑर्डरली बिहेवियर शो करेंगे। तो उन मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर, रैंडमनेस डिक्रीज हो गई। यस सर। बल्क में उनके पास ज्यादा स्पेस अवेलेबल था टू स्प्रेड आउट द एनर्जी, और सरफेस पे आने के बाद उनके पास लिमिटेड स्पेस है टू स्प्रेड आउट द एनर्जी। सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ द एंट्रोपी। यस सर। ठीक है। So here firstly delta H is reduced, and on the basis of that our Gibbs free energy is reduced. So okay, basically, like as we know, enthalpy is the amount of heat which any system hold. what is Gibbs energy? So Gibbs energy is the energy which a system hold to do spontaneous work. Spontaneous activities. Yes, correct. So adsorption is a spontaneous process or a non-spontaneous process? Absorption is a spontaneous process. So that means delta G will always be negative. Delta G will first be negative, then it will reduce towards zero. Then when नहीं, अभी हम स्टेबिलिटी पे नहीं जा रहे, प्रोसेस की बात at the initial condition, yes, it will be negative. तो इसीलिए तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा।
Okay. इसीलिए एड्सॉर्प्शन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। डेल्टा जी यही बताता है, उसका और कोई काम ही नहीं है। It's all in chemical engineering, gives energy, just tell us about the spontaneity of the process. Yes, अब sir. यही चीज आप केमिकल रिएक्शंस में अगर हम आए तो आप मुझे ये बताओ, आपने थिले मॉडल्स पढ़ा है? कैटालिटिक रिएक्शंस पढ़ी हैं? हाँ, yes sir. In CR, yes, Thiele modulus. तो इन कैटालिटिक रिएक्शंस दे आर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, एक सिनेरियो दे रहा हूँ। सपोज मेरे पास अमोनिया सिंथेसिस हो रहा है, N2 + H2 गिव्स NH3, ठीक है? तो दो सिनेरियो है, फर्स्ट N2 H2 NH3, सेकंड सिनेरियो N2 H2 NH3 विद आयरन एज अ कैटलिस्ट। तो अब मुझे आप बताओ कि ये दोनों प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगी या ओनली वन ऑफ द सिनेरियोस? Sir, all depends on their activated energy, activation energy. Like as we know that catalyst, with the presence of catalyst, activation energy is reduced. So the amount of Gibbs free energy it required in negative to initiate the reaction is less in the case of catalytic reaction, but that's not case in the case of non-catalytic reactor. Gibbs energy required negative is, yeah, like ये तो हमने पढ़ा है। अगर डेल्टा ई मतलब फॉर एनी एनर्जी, डेल्टा ई इज नेगेटिव, दैट मींस एनर्जी इज गोइंग आउट, एंड डेल्टा ई पॉजिटिव मींस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो आप डेल्टा जी नेगेटिव को रिक्वायर्ड कैसे बोल रहे हैं? So if delta G is negative, then only the reaction will initiate spontaneously. हाँ, तो दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग ना, कैटालिटिक रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? Do you understand spontaneous processes? Yes, sir. We don't have to provide any energy to initiate the reaction. So catalytic reaction will non-spontaneous reaction. Nitrogen, hydrogen, catalyst. Do you need to supply any external energy to initiate the reaction? Just like combustion. Sir, what is the reaction once again? Ammonia synthesis. अच्छा, ammonia synthesis. So ये पढ़ा भी होगा आपने केमिकल टेक्नोलॉजी में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। तो पूरी इंडस्ट्री पढ़ी है आपने इसके ऊपर, तो मैं तो बेसिक प्रोसेस पूछ रहा हूँ बस। So as far as I know, ammonia is a high pressure process. So we are initially that is for the industrial purpose. That is to optimize the conditions. Here we are not talking about the optimization of process. Here we are talking about the fundamentals of the process. एक example है. This is water. Now suppose I have ethanol. Initial state separated. In a empty container, if I put water and if I put ethanol, what will happen? So it will release Which heat. mixture I will get, homogeneous or heterogeneous? We will get homogeneous mixture. Correct. So means mixing is taking place properly. So that is a natural, or you need to do some efforts. You're required to do some efforts. Naturally हुई है ना? Yeah, natural. Since it's whole like So that is a spontaneous process. Yes sir. तो वहां पे डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी उसका नेगेटिव ही होगा। Initial मतलब G1
इनिशियल स्टेट माइनस जी टू फाइनल स्टेट। हाँ, अब यहीं पे अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज वाटर एंड ऑयल, any oil you can think. So I am putting water, I am putting oil. They will form heterogeneous mixture, yes sir. no mixing. Hmm. So what is gives energy change? Positive or negative? It will be positive. So अगर नेगेटिव होता तो मिक्सिंग हो जाती ना, मिक्सिंग नहीं हुई मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। आपने गिव्स एनर्जी पढ़ा है? yes sir, gives energy पढ़ा है। प्रॉपर्टी चेंज ऑफ मिक्सिंग, ये सब चीजें पढ़ी हैं yes sir। सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स। हाँ, तो आपको ये फिर समझ में आ रहा है कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा इस केस में। सर बट इस केस में होमोजेनियस फेज नहीं बन रहा है ना, यानी हेट्रोजीनियस ही बन रहा है। सो हाँ, हेट्रोजीनियस बन रहा है, इसलिए तो डेल्टा जी पॉजिटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब if delta G is yes, negative, positive man, G2 minus G1, we have to, that means process is spontaneous in forward direction. yes If sir, delta G is 0, that means process is in equilibrium. Hmm. If delta G is positive, that means process is spontaneous in backward direction. That's how we can think. yes मतलब forward direction में non spontaneous, but backward direction में spontaneous. Correct? और मिक्सिंग का बैकवर्ड मतलब सेपरेशन, separation, तो वो सेपरेटेड स्टेट में रहेंगे। understood sir। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वाटर एंड ऑयल के केस में सपोज डेल्टा जी की वैल्यू 250 जूल पर मोल है, 250 जूल पर मोल ऑफ मिक्सचर, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? व्हाट कैन आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? So we can understand that since gives you energy is positive term, so there will be no spontaneous process. Like in this case, mixing will not be possible. So we can conclude from that. ये तो डेल्टा जी अगर मैं ग्रेटर देन 0 बोलता तो भी हो जाता। 250 जूल पर मोल का क्या मीनिंग हुआ? हाँ, so आपने गेट के पीवाई की उसकी है सॉल्यूशन थर्मो में? हाँ, yes sir. So since it's क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा था 8 मोल CO2 मिक्स विद 2 मोल्स ऑफ आर्गन और समथिंग लाइक दिस, व्हाट विल बी द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन? separation, yes. ऐसा न्यूमेरिकल कुछ याद आ रहा है, किया होगा आपने? हाँ, yes sir. वो वर्क रिक्वायर्ड किसके इक्वल था? डेल्टा जी के इक्वल, minus of del G. W इक्वल टू डेल जी। और हाँ, सिंस yes. डेल जी इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई W इज आल्सो नेगेटिव, और W नेगेटिव मींस वर्क इज नीड टू डन ऑन द सिस्टम। Yes. यही मतलब हुआ ना, अगर वाटर एथेनॉल मिक्स हो गए मतलब उनका डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब मुझे मिनिमम उतना वर्क करना होगा टू सेपरेट देम। Yes sir. इक्विलिब्रियम का मतलब तो दोनों प्रोसेस हो गई ना, एक Yes तरह sir. से एज हो गई। इक्विलिब्रियम मींस एज, सच काइंड ऑफ अ सैचुरेशन पॉइंट, कि अब हम इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं प्लस माइनस करने पर। Yes sir. करेक्ट? Correct. तो डेल्टा जी अगर 250 जूल पर मोल है, इट मींस मुझे सिस्टम में 250 जूल वर्क प्रोवाइड करना होगा टू मेक डेल्टा जी 0। 0. Yes. और उसका मतलब डेल्टा जी 0 मतलब मिक्सिंग भी हो जाएगी। ये मीनिंग हुआ कि डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ रहा है लाइक 250, तो इसका मतलब 1 मोल मिक्सचर के लिए मुझे 250 जूल एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी एक्सटर्नली, तब जाके वाटर और ऑयल मिक्स होंगे। Yes sir. आया समझ में? अब Yes sir, understood. आगे. इस तरह से चीजें पढ़नी होती हैं। आपने बस Yes. फॉर्मूला वगैरह कर लिए, पीवाई की कर लिए, हो गया। चलो कोई बात नहीं, सीआरई में फिर आगे बढ़ते हैं। आपने वो पढ़ा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? Yes sir. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? So basically order of reaction for elementary reaction, order of reaction is the sum of exponential of all the concentration terms in the rate equation.
And what it signifies? So it signifies that what will be the rate of reaction when concentration is changed, in what in which basically at what ratio the rate will increase or decrease Ratio? when we change. Yeah, like R2 is R2 by R1. Like if we change the concentration, that at what rate of reaction will be changed. By what order concentration will Ah. affect the rate of reaction? Yes. Okay. So can you write any example of a second order reaction having two reactants? Like real equation, like a real chemical reaction, na? Or just Yes. A plus B gives CD. Daily life example, real life example, I mean. Can you recall any? Have you performed experiments in CRE lab during BTech? आपके कॉलेज टाइम में सीआरई की लैब हुई थी? सर हुई तो थे, बट सिंस वी डोंट हैव सुपीरियर। मैं बस पूछ रहा हूँ हुई थी या नहीं? हाँ सर हुई थी। तो वहां पे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, जिसमें आपने दो रिएक्टेंट्स यूज किए होंगे, वन इज एथाइल एसीटेट एंड सेकंड इज NaOH। ऐसी कुछ रिएक्शन याद आ रही है? एथाइल एसीटेट प्लस NaOH गिव्स व्हाटएवर। सर कुछ याद नहीं आ रहा। चलो मैंने रिएक्शन बताई दी आप। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, कैन वी रिड्यूस द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? Like second order reaction it is, can we reduce the order of reaction? Yeah, we can reduce it like with the help of pseudo order. How? If we consider pseudo orders, like if we increase the concentration of like we consider like By increasing the concentration of one of the reactant? If we consider one as a axis reactant and one as a limiting reactant, then as we know that order will depends on the limiting reaction. So from this we can considering pseudo order reaction, we can decrease the order of reaction. So here my question is, in this case, you know, every chemical reactor we design for a specific type of reactions only. Yes. You know, so for a chemical reaction like this, if I need to design a reactor, so I will design that based on the theoretical order or the pseudo order. Sir, we will design on the basis of theoretical order. Okay. And if we have to do it, if we have to reduce the order, then in the existing reactor, can we do that? Yeah, we can manipulate the inlet condition, na? So on the basis of that. Feed composition. Yes. Correct. Wonderful. चलो यही है फिलहाल जो मुझे पूछना था। सर आपने तो काफी डिस्कशन कर ली। मैंने आपसे हीट के 2 क्वेश्चन पूछे स्टार्टिंग में, तो सब ने थर्मो के पूछ लिए, देख रहे हो? आप फीडबैक दे दो सर। ओके, तो बाकी सुमित आपकी नॉलेज काफी ठीक है, मतलब इतना मैंने फील किया कि आपके साथ बस थोड़ा सा इशू है, आप पता नहीं मे बी ओवर थिंकिंग कर रहे हो बीच में, जैसे अगर 1-2 जगह आंसर नहीं दे पाए या स्टक हो गए कहीं, या थोड़ा पैनल में किसी ने घुमाने की कोशिश की, तो आप फिर
एक तरह से काइंड ऑफ स्विच ऑफ हो जाते हो फॉर अ मोमेंट, ठीक है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ट्राई टू Okay. बी स्विच ऑन ऑल द टाइम, ठीक है। वहां पैनल में बार्क में मैंने भी इंटरव्यू दिया है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, पैनल में 4-5 लोग जो होते हैं, उनमें एक आदमी का काम यही होता है आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बनाए रखना। ऐसे लोग होते हैं, वो समटाइम्स दे डू, ठीक है। Yes, sir. मतलब आपसे पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, आपने अपना नाम बताया, तब भी ऐसे एक्सप्रेशन देंगे कि जैसे आपको फील होगा कि मैंने गलत ना तो नहीं बता दिया, समझ Yes, sir. रहे हो। और सिमिलरली वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पर्सन भी होंगे कि आपको हिंट दिया जाएगा, अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ आप आंसर कर सकते हो, कहीं छोटा मोटा स्टक हो रहे हो, तो दे विल गिव यू हिंट। तो आपको वहां अवेयर रहना है Yes, sir. सिचुएशन के हिसाब से। तो वो चीज यहाँ पे भी, जैसे सर भी आपको हिंट देने का ट्राई कर रहे थे बीच बीच में, मैंने भी थोड़े थोड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिंट दिए, ठीक है। तो आप कुछ जगह कैच किए, कुछ जगह नहीं किए, तो ट्राई टू फोकस, सारी लोगों की बात सुनो चल क्या रहा, इफ दे आर टॉकिंग टू यू, आपस में Yes, कर sir. रहे हैं फिर तो नहीं, बट अगर आपसे बात कर रहे हैं तो सारी बातें सुनो, उससे आपको हिंट भी मिलेंगे, पता चलेगा कि कौन सा वो पर्सन है जो मुझे हिंट दे रहा है, कंटिन्यूसली हेल्प कर रहा है। और यही उनका पर्पस भी है, क्योंकि बीइंग अ साइंटिस्ट यही मतलब है ना कि अगर एक बार आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गए, तो दोबारा करने की हिम्मत है, उसे थोड़ा इम्प्रोवाइज करके, ठीक है। Yes, sir. क्या आपका वो मेंटल स्ट्रेंथ है, कैरेक्टर है, तो दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो आप में वो चीज है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि स्विच ऑफ ना हो, जो मोमेंटरली बीच बीच में हुआ कुछ जगह। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो सिंपली नो बोल दो, कोई इशू नहीं है। स्टोरी Okay. आपने बनाई नहीं, वो अच्छी बात है, बट फिर भी मैं बस बता रहा Hmm. हूँ कि अगर नहीं है तो नो बोल देना, क्योंकि हमारे डिस्कशन में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ आपने सॉरी या नो बोला हो। मुझे ध्यान नहीं, अगर एक आध बोला होगा तो वो हमने इग्नोर कर दिया होगा, ठीक है। तो बोल देना वहां, और अपना फोकस बनाए रखना, स्माइल रखना चेहरे पे, Yes, sir. वरना वो जो रणबीर कपूर वाला लुक है, वो रॉक स्टार वाला, वही उन्हें फील आएगा, नहीं वो सर ठीक है। अभी दूंगा सर। वो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको क्लीन शेव होकर जाना है नहीं जाना है, जस्ट अ बेसिक एटिकेट। ऐसे भी अगर आप सही लग रहे हो जा सकते हो, विराट कोहली भी तो अपनी बियर्ड मेंटेन करता है, कौन सा क्लीन शेव में वो घूमता है, एंड ही यूथ आइकन, नेशनल हीरो, Yes, ठीक है। तो यू कैन, इट्स नॉट अबाउट द लुक्स, इट्स अबाउट द बॉडी लैंग्वेज एंड योर कॉन्फिडेंस। अगर आप ऐसे कॉन्फिडेंट हो तो इसे बस थोड़ा सा नाइस लुक करके, ट्रिम करके आप जा सकते हो, yes sir. ठीक है। बस यही मेरी तरफ से फीडबैक था। और एक दो चीजों का ध्यान रखना, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं आपने बोले हैं, उन्हें एक बार ऑर्डर्स प्लान कर लेना दोबारा, क्योंकि Okay, जैसे sir. आपने हीट बोला था, अब आई डोंट नो एक्चुअली आपको हीट नहीं आता या बस थोड़ा नर्वस थे जैसे सर ने कहा, इसलिए आप फंस गए बीच में हीट में कुछ जगह, तो थोड़ा मुझे लगता है ऑर्डर आपके पास सोचना चाहिए, Okay, sir. ठीक है। तो वो देख लेना, बाकी सर आपको और बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी थोड़ी इस सेशन में ज्यादा ग्रिलिंग हो गई है। ऐसी ग्रिलिंग बार्क में नहीं होगी, डोंट वरी, ठीक है। बार्क का इंटरव्यू इससे आसान रहने वाला है, और जिस तरह की ग्रिलिंग हुई है, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और जो आपका रिस्पॉन्स था, वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बार्क के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे, बिकॉज बार्क के अंदर इतना स्ट्रेस क्रिएट नहीं किया जाता। बार्क के अंदर इस तरह से एक्सप्रेशंस नहीं दिए जाते जैसे हमने यहाँ पर दिए है आपको नर्वस करने के लिए। बार्क के अंदर आपको उल्टा की रिलैक्स करवाया जाएगा, और ये मॉक इंटरव्यू काफी हेल्प करेगा आपकी बार्क में, क्योंकि इस मॉक इंटरव्यू की यादें आप लेकर जब बार्क में जाओगे तो बार्क में आपको लगेगा तो बहुत आसान था, मॉक ज्यादा मुश्किल था और एक्चुअल इंटरव्यू ज्यादा आसान था। बाकी नॉलेज आपको है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे आपने उसका आंसर दिया, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि हम ही से पढ़े और हमको बता रहे हो तो कई बार नर्वसनेस आ जाती है, कई बार चीजें बंदा भूल जाता है कि क्या आप देखेंगे सर सब पढ़ा रखे फिर भी मैं नहीं बता पा रहा, तो समटाइम्स दीज फीलिंग्स कम्स। बट बार के इंटरव्यू में ऑब्वियसली नए पैनलिस्ट हो गए, फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होगी, तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली सब कुछ बता पाओगे। बस एक ही इंप्रूवमेंट मुझे लगता है जो चाहिए वो ये कि जब आप चीजों को बताओ थोड़ा प्रोफेशनली बताओ। जैसे मैं एजम्पशन पूछ रहा हूँ और आपने बोला स्टडी स्टेट, तो डोंट Yes, sir. जस्ट टेल लाइक दिस, बी Mhm. प्रोफेशनल, है ना। Okay, sir. सारे तो थोड़ा ढंग से अच्छे से एक्सप्लेन करके चीजों को, बिकॉज आपको कितनी नॉलेज है ये उन्हें तो तभी पता लगेगा ना जब आप सही से कम्युनिकेट कर पाओगे, बता पाओगे। Yes, sir. जितना आप बताओगे उतना ही उन तक जाएगा। आपके अंदर कितना ज्ञान है और आपके कितने सालों का स्ट्रगल है, ये मैं तो जानता हूँ, लेकिन वो नहीं जानते।
Yes, sir. और उन तक ये चीज सिर्फ हम उनके क्वेश्चंस के आंसर के थ्रू बता सकते हैं, बिकॉज आपका स्ट्रगल आपकी नॉलेज के थ्रू दिखना चाहिए। लाइक हम जब पढ़ाते हैं, आप देखते हो और आप कहते हो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत नॉलेज से पढ़ाते हो, तो वो जो जर्नी है पिछले 13-14 साल की वो दिखती है ना जब हम पढ़ाते हैं। Yes, तो sir. ऐसे ही आपका जो स्ट्रगल है, मैं पर्सनली जानता हूँ आपका स्ट्रगल, कितने आप कंसिस्टेंट रहे हो, तो वो चीज आपके कम्युनिकेशन में दिखना चाहिए। नॉलेज में दिक्कत नहीं है, बस वो नॉलेज दिखानी भी तो है ना। सब कुछ आता है, बस वो अच्छे से दिखाना है। तो क्वेश्चन के आंसर को सजाकर थोड़ा सा आपको वहां पर बताना है, थोड़ा सा Okay. अच्छे से एक्सप्लेन करके। लेटर पे सजा। बाकी अच्छी बात है कि आप टाइम ले रहे हो और क्वेश्चन का आंसर देने में। यू कैन टेक टाइम इन द बार्क ऑल्सो, दैट्स अ गुड थिंग। सोच लो, समझ लो क्या बोलने वाले हो, और उसके बाद आप बोलो, है ना। और अच्छा जाएगा इंटरव्यू, मुझे लगता है काफी अच्छा जाएगा। बस अच्छे से आपको वहां पे डिटेल में थोड़ा जवाब देने की कोशिश करो। Okay, sir. Actually, I was not expecting combination of absorption and I have studied, but since it was a long time and आप absorption. बाकी स्टूडेंट्स के सेशन देखोगे, आज मॉर्निंग में मैंने 2 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया था, वहां पे हमने डिस्टिलेशन कॉलम, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, सीआरई, चारों चीजें डिस्कस की हैं कॉम्बिनेशन में। और यही बार्क में होता है, मतलब मेनली वहां सभी सब्जेक्ट्स मिक्स करेंगे। स्टार्ट हमेशा फंडामेंटल से होगा, लाइक व्हाट इज विस्कोसिटी, वो बताते बताते बर्नौली इक्वेशन और फिर उसके एप्लीकेशन और फिर डार्सी-वाइसबैक इक्वेशन, टर्बुलेंट और बाउंड्री लेयर सेपरेशन तक पहुंच जाएंगे। विस्कोसिटी से डिस्कशन शुरू होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा इंटरव्यू सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे स्टार्ट हो, बाहर आने के बाद आपको लगे यार पूछा तो एक ही क्वेश्चन था, और वही मेरा डिस्कशन होता गया। इट मे हैपन, बहुत लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना एनर्जी के साथ आंसर किए, कितना नॉलेज के साथ आपने उन्हें आंसर किया, और वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आपका इंटरव्यू स्टार्टिंग में हुआ है, लास्ट में हुआ है, किस मोमेंट पे हुआ है। तो इसलिए आपका एनर्जी में रहना हम जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता आप वहां स्टार्टिंग में बुलाए जाओगे रूम में या लास्ट में बुलाए जाओगे। लास्ट में आते आते हर कोई थोड़ा बहुत एनर्जी लूज कर जाता है, बट आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ना, उनके लिए नहीं है। तो आपको अपनी वो एनर्जी, स्माइल मेंटेन करनी है। जब वो देखेंगे आप कितने चार्मिंग हो, स्माइल के साथ, एनर्जी के साथ आए हो, तो उनके अंदर भी वो एनर्जी वापस आएगी, इफ दे हैव लूज बाय चांस, ठीक है। तो इसलिए आपको ही वो एनर्जी मेंटेन करनी है। इट्स ऑल अप टू यू। Yes, understood. Okay, ठीक thank है। you very much, sir, सुमित, for बाकी conducting. जितने भी मॉक इंटरव्यूज हो रहे हैं ना, वो सब देख लेना, है ना। Yes, sir. उससे हेल्प Okay, sir. मिलेगी आपको। और पिछले साल भी हमने बाकी इंटरव्यूज लिए थे, टाइम मिले तो एक बार उसको भी गो थ्रू कर ले। Okay, sir. Sure, प्लेलिस्ट sir. मैंने शेयर कर रखी ऑलरेडी ग्रुप हाँ. पर, है ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा। Thank you very much, ऑल sir. द बेस्ट Both of सुमित। you. Thank you.